वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स वाले इनके सर। आज के सेशन में हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 2.4 फ्रॉम द टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सो लेट अस स्टार्ट द सेशन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन गिवन इज कंपेयर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू द जनरल फॉर्म एंड राइट द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c। जिसमें हमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। हमें क्या करना है, वी नीड टू कंपेयर दिस इक्वेशन विद द जनरल फॉर्म, राइट। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन विद what is the general form of a quadratic equation, ax square plus bx plus c is equal to 0. We have a is equal to x square का कोएफिशिएंट a है और यहाँ पर x square का कोएफिशिएंट क्या है 1। इसका मतलब a की वैल्यू कितनी हो गई 1। नेक्स्ट x का कोएफिशिएंट b है और यहाँ पर x का कोएफिशिएंट कितना है -7। So b is equal to -7 and c is equal to c क्या है, it is a constant part। तो यहाँ पर constant part क्या है 5। So we have a is equal to 1, b is equal to -7 and c is equal to 5। राइट, समझ में आ गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, 2m स्क्वायर is equal to 5m minus 5। तो सबसे पहले क्या करना है, इसे जनरल फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखोगे, सब कुछ लेफ्ट साइड में लेकर आ जाना है। तो 2m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये जो राइट हैंड साइड में है, मैंने इसे लेफ्ट साइड में लेकर आ गया हूं मैं। तो +5 का हो जाएगा -5, -5 का हो जाएगा +5, करेक्ट। सो देयरफॉर अगेन क्या लिखना है यहां पे, कंपेयरिंग given equation with ax square plus bx plus c is equal to 0, we have a is equal to, यहां पर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है और यहां पर m स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 2। so a will be equal to 2, b is equal to, यहां पर x का कोएफिशिएंट b है और यहां पर m का कोएफिशिएंट कितना है, इट इज -5 एंड c इज इक्वल टू, c क्या है, इट इज द कांस्टेंट पार्ट और यहां पर कांस्टेंट पार्ट क्या है +5। समझ में आ गया ये। नेक्स्ट क्या है इक्वेशन, y स्क्वायर इज इक्वल टू 7y, करेक्ट। अब इसे पहले जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं। सो दिस इज y स्क्वायर -7y is equal to 0, correct। now again comparing given equation with ax square plus bx plus c is equal to 0, we have a is equal to, यहां पर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है और यहाँ पर y स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1। तो यहाँ पे आ जाएगा 1। उसके बाद b इज इक्वल टू, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट b है, यहाँ पर y का कोएफिशिएंट कितना है -7 एंड c इज द कांस्टेंट पार्ट। यहाँ पे कांस्टेंट पार्ट प्रेजेंट है क्या, नहीं। इसका मतलब कांस्टेंट पार्ट कितना है 0। समझ में आ गया है। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम प्रैक्टिस सेट 2.4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, सॉल्व यूजिंग फॉर्मूला। हमें क्या करना है, यूजिंग फॉर्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना है। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। कैसे सॉल्व करना है, केयरफुली देखना है। फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, यू नीड टू कन्वर्ट दिस इनटू जनरल फॉर्म एंड देन कंपेयर द गिवन इक्वेशन with ax square plus bx plus c is equal to 0। तो you will get a is equal to x square का कोएफिशिएंट a, यहाँ पर x square का कोएफिशिएंट 1, उसके बाद x का कोएफिशिएंट b, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 6
एंड कांस्टेंट पार्ट इज 5। मैंने क्या बोला, सबसे पहले यू नीड टू कन्वर्ट इट इनटू जनरल फॉर्म, करेक्ट। और जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद यू नीड टू कंपेयर इट विद ax square plus bx plus c is equal to 0. From this you will get the value of a, b and c, right। अब क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो फॉर्मूला अप्लाई करने के पहले आपको क्या करना है, b square minus 4ac इसकी वैल्यू निकाल लेना है, ठीक है। फॉर्मूला अप्लाई करने के पहले आपको क्या करना है, b square minus 4ac की वैल्यू निकालना है। सो व्हाट इज b, इट इज 6 whole square minus 4 into what is a, 1 into 5, so this is equal to 36 minus 4 5s are 20, correct, and this is equal to 36 minus 20 is equal to 16, right। 36 minus 20 is equal to 16, right। b square minus 4ac की वैल्यू कितनी आ रही है, 16, and this value is greater than or equal to 0, ठीक है। ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहां पर है क्या, यस। अब आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू, यहां पर क्या चाहिए हमें, x चाहिए, तो यहां पर मैंने लिख दिया है x। फॉर्मूला क्या है, माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ b square minus 4ac divided by 2a, right। Therefore x is equal to, what is b, b की वैल्यू कितनी है, 6, so this will be minus 6 plus or minus under root of b square minus 4ac की वैल्यू कितनी है, 16, तो यहां पर मैंने लिख दिया 16 divided by 2 into a। So what is a? A की वैल्यू है 1. So therefore x is equal to minus 6 plus or minus square root of 16 is 4 divided by 2 into 1 is 2. So therefore we can write x is equal to minus 6 plus 4 divided by 2, or x is equal to minus 6 minus 4 divided by 2. So x is equal to minus 6 plus 4 is minus 2 divided by 2, or x is equal to minus 10 divided by 2. So x is equal to minus 1, or x is equal to minus 5. समझ में आ गया कैसे सॉल्व किया बाय यूजिंग द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, x is equal to minus b plus or minus under root of b square minus 4ac divided by 2a, जहां पर b square minus 4ac should be greater than or equal to 0। इसलिए मैंने पहले क्या फाइंड आउट किया है, b square minus 4ac, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 16, इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये आने के बाद मैंने उसे इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट किया है, और सॉल्व करने के बाद x के दो वैल्यूज आ गए हैं, x is equal to minus 1 and x is equal to minus 5। समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो जनरल फॉर्म में है ये, तो पहले क्या करना है, इसे कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन विथ ax square plus bx plus c is equal to 0, we have a is equal to 1, b is equal to minus 3 and c is equal to minus 2, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, b square minus 4ac is equal to, so this will be minus 3 whole square minus 4 into 1 into minus 2, and this is equal to 3 square is 9 minus minus plus 4 2s are 8, so this is equal to 17। इसकी वैल्यू आ गई है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, करेक्ट, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 वैल्यू आ गई है। अब क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है, फाइंड आउट क्या करना है, x, so x is equal to minus b plus or minus under root of b square minus 4ac divided by 2a,
So therefore x is equal to minus b, means minus of minus 3 plus or minus under root of b square minus 4ac is 17. So 17 divided by 2 into a is 1, and this is equal to minus minus plus or minus root 17 divided by 2. So therefore we can write x is equal to 3 plus root 17 divided by 2, or x is equal to 3 minus root 17 divided by 2. समझ में आ गया ये क्वेश्चन? बहुत इजी है. पहले क्या किया है, कंपेयर द गिवन इक्वेशन विद द जनरल फॉर्म. यहां से फाइंड आउट किया है a b c. एक बार ये तीनों वैल्यूज आ गए, b स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड आउट करना है. अगर b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है और x के वैल्यूज फाइंड आउट करना है. समझ में आ गया ये? सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, 3m स्क्वायर प्लस 2n माइनस 7 इज इक्वल टू 0. सो फर्स्ट स्टेप क्या करना है आपको, कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन with ax square plus bx plus c is equal to 0. We have a is equal to 3, b is equal to 2 and c is equal to minus 7. Right? उसके बाद फाइंड आउट करना है b square minus 4ac and this is equal to b is 2, उसका स्क्वायर minus 4 into 3 into minus 7 and this is equal to 2 square is 4 minus 4 3s are 12 and 12 7s are 84, right? और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, and this is equal to 88. नेक्स्ट, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है. अब क्या फाइंड आउट करना है हमें यहाँ पर, m. सो देयरफॉर m इज इक्वल टू minus b plus or minus under root of b square minus 4ac divided by 2a. So therefore m is equal to minus of b is 2 plus or minus under root of b square minus 4ac is 88 divided by 2 into 3. So therefore m is equal to minus 2 plus or minus square root of 88 can be written as under root of 4 multiplied by 22. Correct? आप इसे ऐसे लिख सकते हो and divided by 2 3s are 6. So we have m is equal to minus 2 plus or minus root 4 can be written as 2 और ये under root of 22 as it is divided by 6. नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कर सकते हो, इन दोनों टर्म्स में 2 को बाहर कॉमन निकाल सकते हो. सो वी हैव 2 कॉमन, ब्रैकेट में रह जाएगा -1 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 22 डिवाइडेड बाय 6. सो 2 1s are 2 3s are. सो देयरफॉर वी हैव m is equal to -1 plus root 22 divided by 3 और m is equal to -1 minus root 22 divided by 3. समझ में आ गया ये? इजी है. So the next question is 5m square minus 4m minus 2 is equal to 0. Right? तो क्या करना है, comparing given equation with ax square plus bx plus c is equal to 0. We have a is equal to 5, b is equal to -4, c is equal to -2. Right? So therefore b square minus 4ac is equal to -4 whole square minus 4 into a into c. So this is equal to -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 माइनस माइनस प्लस 4 5s are 20, 22s are 40 and this is equal to 56
करेक्ट, इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना है, m इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, राइट। सो देयरफॉर m इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस 4 प्लस और माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac is 56, so root of 56 divided by 2 into the value of a is 5, so m is equal to minus minus plus 4 plus or minus under root of 56 can be written as 4 multiplied by 14, right। 4 multiplied by 14 लिख सकते हैं हम इसे, divided by 2 into 5 is 10, correct। So m is equal to 4 plus or minus root 4 is 2 under root of 14 divided by 10, right। अब यहां पर 4 है, यहां पर 2 है, दोनों में से कॉमन आप 2 निकाल सकते हो। So therefore m is equal to 2 into bracket 2 plus or minus under root of 14 divided by 10, so 2 ones are 2 5s, right। Therefore m is equal to 2 plus root 14 divided by 5 or m is equal to 2 minus root 14 divided by 5। समझ में आ गया है, इजी है ये क्वेश्चन। So the next question is y square plus 1 by 3y is equal to 2। तो सबसे पहले क्या करना है, इसे सिंप्लीफाई कर लेना है और इसे जनरल फॉर्म में लिख देना है। कैसे करना है, 3 into y square that is 3y square plus y divided by 3 is equal to 2, करेक्ट। अब इसे ऐसे लिख सकते हो, 3y square plus y is equal to 3 into 2 is 6, और इसे जनरल फॉर्म में कैसे लिखना है, 3y square plus y minus 6 is equal to 0। एक बार जनरल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद कंपेयरिंग given equation with ax square plus bx plus c is equal to 0, we have a is equal to 3, b is equal to 1, c is equal to minus 6, correct। So b square minus 4ac is equal to 1 square minus of 4 into 3 into minus 6, and this is equal to 1 minus minus plus 4 3s are 12 and 12 6s are 72, and this is equal to 73 and it is greater than or equal to 0, right। अब अप्लाई करते हैं फॉर्मूला। सो y is equal to minus b plus or minus under root of b square minus 4ac divided by 2a, and this is equal to minus of 1 plus or minus under root of b square minus 4ac is 73 divided by 2 into the value of a is 3, so this is equal to minus 1 plus or minus root of 73 divided by 6, so therefore y is equal to minus 1 plus root 73 divided by 6 or y is equal to minus 1 minus root 73 divided by 6। समझ में आ गया। ये सबसे पहले यहाँ पर क्या किया है, गिवन इक्वेशन को जनरल फॉर्म में कन्वर्ट किया है, उसके बाद कंपेयर इट विद ax square plus bx plus c is equal to 0, जहां से हमें मिल गए हैं a b और c के वैल्यूज। एक बार a b c की वैल्यूज आ गए, देन यू कैन फाइंड आउट b square minus 4ac एंड देन अप्लाई दिस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। समझ में आ गया ये। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5x square plus 13x plus 8 is equal to 0। तो सबसे पहले क्या करना है, कंपेयरिंग given equation with ax square plus bx plus c is equal to 0,
we have a is equal to 5, b is equal to 13 and c is equal to 8, right? Therefore b square minus 4ac is equal to 13 square minus 4 into 5 into 8, correct? And this is equal to 13 square is 169 minus of 4 5s are 20 and 20 into 8 is 160 and this is equal to 9. अब 9 क्या है फिर से? It is greater than or equal to 0. Therefore क्या कैलकुलेट करना है? x. So x is equal to minus b plus or minus under root of b square minus 4ac divided by 2a. So therefore x is equal to minus 13 plus or minus under root of b square minus 4ac is 9 divided by 2 into the value of a is 5. So therefore x is equal to minus 13 plus or minus square root of 9 is 3 divided by 5 2s are 10. So therefore x is equal to minus 13 plus 3 divided by 10 or x is equal to minus 13 minus 3 divided by 10. So x is equal to minus 10 divided by 10 or x is equal to minus 16 divided by 10. So therefore x is equal to minus 1 or x is equal to ये कितना हो जाएगा? It will be minus 8 by 5. समझ में आ गया ये क्वेश्चन? होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.